तो भाई चलिए आते हैं 3.35 ए की तरफ, राइट. लुक्स लाइक अ सिमिलर सम टू द वन दैट वी हैव डन इन 3.35, लेकिन थोड़ा अलग है. ये आया था December 21 8 मार्क के लिए. नाउ on 1st July 2021 Mr. P has made the following investment. ML Limited के 1000 शेयर खरीदे उन्होंने, 1000 shares, having a beta of 1.25, purchase price per share 700, राइट, यानी 70,000 का परचेज है टोटल उनका, सॉरी 7 लाख का परचेज है उनका, राइट. ठीक है. नाउ he wants to hold the investment till end of September 2021 with an expectation of huge dividends to be announced in the AGM, right? In the AGM. On the date of investment, September Nifty futures were quoting at 17,500 होगा, not 1,70,000. Nifty 1,75,000. भाई अलग लेवल की खुशी हो जाएगी तब तो. चलिए 17,500 type on our end and tradable with lot size of 50 for each contract, यानी 50 lot size है. You are investment advisor to Mr. P. Please advise Mr. P how to hedge his market exposure using the available data. सीधी बात है, if he is long on this share and he is holding, right, for some time, ठीक है, तो कुछ नहीं है, we'll go for Nifty short positions. Please advise Mr. P how to hedge his market exposure. Calculate the profit or loss Mr. P would make during the expiry of September 21 futures in following situation. क्या उनका profit loss situation रहेगा? ठीक है. In the following situation, Nifty future rise by 10%, ML Limited falls by 5%. अब इसमें क्या हुआ था, जब मैंने इसके लिए एक बार YouTube में एक्सप्लेनेशन दिया था, I took this and this situation, Nifty future rising by 10%, ML Limited falls by 5%. ठीक है. What we see over here in the previous sum, November 2013 वाला, at Ram buys 10,000 shares of so and so, अभी हमने किया था, ठीक है. He sells 5,000 shares of A Limited. He obtains a complete hedge on Nifty futures, right? इन्होंने 3 पोजीशन बनाई थी, एक लॉन्ग पोजीशन, X Limited पे, A Limited पे शॉर्ट पोजीशन, राइट, एंड निफ्टी पे पोजीशन बनाई थी, राइट, जो कि है 70 लॉट्स लॉन्ग. Assuming no lot size was given, we assumed 1. He closes out his position and what do we notice? ठीक, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ था, लॉन्ग पोजीशन में प्राइस ड्रॉप हो गया, शॉर्ट पोजीशन में प्राइस अप्रिशिएट हो गया. निफ्टी जहां लॉन्ग लिया था, अगेन इट ड्रॉप. सो 3 डिफरेंट थिंग्स हैपेंड लीडिंग टू लॉस इन ईच ऑफ द सिचुएशंस. तो उसी ग्राउंड्स पे मैंने सॉल्व किया था ये वाला सम December 2021 इन माय यूट्यूब वीडियो. ठीक है. नाउ एक्सपायरी ऑफ सितंबर फ्यूचर्स के टाइम पे फॉलोइंग सिचुएशन है, निफ्टी फ्यूचर राइज बाय 10%, ML लिमिटेड falls by 5%. तो I took it as Nifty futures rise by 10% and ML limited falls by 5%. हो सकता है, right? In 2-3 month period, that is shorter period of time, the share and the Nifty may react in different directions altogether, leading to a loss in both the scenarios. करके मैंने solve किया था, right? And then institute had a different mechanism of thinking it altogether. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये दोनों को आइसोलेट करके लिया है, नॉट द वे दे टुक दिस पर्टिकुलर वेरी फेमस सम नवंबर 2013 वाला सम जो था राम का, बहुत फेमस सम है, राइट, जैसे मैंने बताया था. तो उसमें दिस एंड दिस एंड दिस 3 चीजें हैं, तो तीनों को दिस एंड दिस एंड दिस लेना है, या इन्होंने सेपरेटली किया है. So what if Nifty futures rises by 10% and the beta reaction on the stock blah blah? Obviously अगर आप पूरी लॉट साइज आ रही है, मैच हो रहा है, then it will be a complete hedge. And ML Limited falls by 5% means the Nifty would have fallen. So they took both the situations in isolation.
right? So I'll solve it that way. Is it possible for the stock as well as Nifty to rise or fall at the same percentage? कोई भी percentage, कोई भी direction, कुछ भी हो सकता है, right? यही market का सत्य है बालक. Now, चलिए शुरू करते हैं. बहुत ही आसान सा. गिवन क्या है? जनाब का नाम मिस्टर पी. क्वांटिटी बी का वैल्यू ठीक है. साइज ऑफ द पोजीशन कितना होगा? साइज ऑफ द पोजीशन 7 lakh, right? In order to hedge his long position, the investor needs to short Nifty futures. निफ्टी फ्यूचर वैल्यू क्या चल रही है? 17,500. लॉट साइज 50. वैल्यू पर लॉट 8,75,000. नंबर ऑफ लॉट शॉर्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द लॉट इनटू बीटा. ये हम लोगों ने फॉर्मूला भी बहुत बार डिस्कस किया है और पूरा लॉजिक, रेट ऑफ चेंज, स्पीड, उसके ऊपर हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है. तो वैल्यू ऑफ द पोजीशन क्या है? 7 लाख. फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. निफ्टी किस रेट पे मूव हो रहा है? मानो 1%. ये 1.25 टाइम्स मूव हो रहा है, यानी 1.25%. सो अगर निफ्टी 10% मूव होगा, स्टॉक कितना मूव होगा? 12.5% इन द सेम डायरेक्शन, बिकॉज इट्स अ केस ऑफ पॉजिटिव बीटा, राइट? नेगेटिव बीटा हमारे सिलेबस में नहीं है. ठीक है, होना चाहिए वैसे तो. नाउ तो ये हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी कितना मूव करेगा, उससे 1.25x the stock would move. That is nothing but the beta is denoting, or we can call it also the hedge ratio. So obviously we need to bulk up more number of quantities of Nifty in order to ensure that the pace is matching with the stock, right? So उसीलिए बीटा से मल्टीप्लिकेशन होता है. फिर से एक बार, इतना पूरा डिटेल में नहीं करा रहा हूं अभी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं. तो
Don't want to make it very repetitive. भाई बहुत बढ़िया, ये तो एग्जैक्ट 1 लॉट, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर अब तो क्या है, कुछ भी नहीं है, ये हमने बता दिया उनको क्या करना है। मार्केट एक्सपोजर, ही शुड गो फॉर 1 लॉट शॉर्ट ऑन निफ्टी फ्यूचर्स। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ मिस्टर पी ड्यूरिंग द एक्सपायरी। सो आइसोलेशन में सिचुएशन लेना है अपन को, ये 1 हो गया। प्रॉफिट और लॉस तो मिस्टर पी, if nifty futures rise by 10%, the stock price would increase by 12.5%। सीधी सीधी सी बात है, बीटा टाइम्स राइज आएगा। गेन इन स्टॉक वैल्यू कितना है भाई, 700 में इंक्रीज आएगा 12.5% का इनटू 1000 यूनिट्स, 87,500। अब निफ्टी ऊपर चला गया है, करेक्ट, तो वहां लॉस हो जाएगा, हमने शॉर्ट मारा था। कवर करेंगे ना अपन। सो अभी शॉर्ट मारा था हमने किस लेवल पे, 17,500 पे। अब निफ्टी फ्यूचर चला गया ऊपर 10%, ठीक है, यानी 1750 पॉइंट राइज हो गया भाई। अपन को पे करना पड़ेगा, 17,500 का 10% इंटू 1 लॉट इंटू 50 यूनिट्स पर लॉट, 87,500 लॉस। थ्योरेटिकली सब परफेक्टली है जी, लगता है, राइट। प्रैक्टिकल हमने जो पिछला सम किया था, इट इज लाइक दैट, वेयर व्हाटएवर यू टेक एवरीथिंग गोस इन अ लॉस। वो प्रैक्टिकल है, ठीक है, वो ज्यादा रियलिस्टिक सम था। क्या लिखा है, एमएल लिमिटेड शेयर्स फॉल बाय 5%।
Nifty would have fallen by how much? कितने से निफ्टी गिरा होगा? सीधा सीधा हिसाब है, परसेंटेज चेंज, बीटा का फॉर्मूला लिखो, portfolio stock divided by change in Nifty futures. बीटा है हमारे पास, एकदम है, कितना 1.25. परसेंटेज चेंज इन द पोर्टफोलियो है हमारे पास, कितना है भाई? 5%. 5% एमएल लिमिटेड का शेयर फॉल किया ना, राइट? डायरेक्टली 4%. लॉस इन पोर्टफोलियो वैल्यू कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? 5% के हिसाब से 700 रुपीज का प्राइस का शेयर था, 0.05 टू 35,000, 35,000. $17,500, 17,500. इसमें कितने का फॉल आया? We have gone short, obviously, तो दाम गिरेगा, we cover it, so that is our profit. So we have sold at a higher price and we'll buy it at a lower price, making 4% of gains. परफेक्टली हेज ही रहेगा ना? Observation or note, you can write it as this is what happened in the Ram wala sum, right? 3 पोजीशन थी, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, अगेन निफ्टी लॉन्ग, राइट? और तीनों सब उल्टा पुल्टा डायरेक्शन में चला गया. वेर ही वेंट लॉन्ग, प्राइस ड्रॉप बाय 2%, वेर ही वेंट शॉर्ट, प्राइस रोज बाय 3%. निफ्टी फ्यूचर्स ही वेंट लॉन्ग, इट ड्रॉप बाय 1.5%. नुकसान ही नुकसान हो गया. इफ सम हैड गिवन दिस एंड दिस, हाउ डू डील विथ इट, राइट? 10% increase in Nifty, right, and 5% fall in the shares of ML Limited, what would have been our answer in that case?
loss in value of portfolio. $700 into 0.05 into 1000 shares. $35,000 का लॉस. लॉस ऑन निफ्टी फ्यूचर्स कितना महाराज? 17,500 into 10% into one lot having 50 units. 87,500. टोटल लॉस कितना हो जाता इसका? 1,22,500. मोर रियलिस्टिक सिनेरियो. ठीक है, चलिए डन. तो मैं जल्दी से एक रिकैप करा देता हूँ. काफी आसान सा सम है. एंड आई टोल्ड यू हाउ इट वाज इंटरप्रेटेड. सिचुएशंस वर टेकन इन आइसोलेशन एंड नॉट टुगेदर. भाई बंदा है एक मिस्टर पी. ही हैज 1000 shares at 700 rupees of ML Limited, which is having a beta of 1.25. Nifty futures trading at 17,500. 17,500 tradable with a lot size of 50. Right, what he should do, he should go short in Nifty because he wants to hold it from entire July, August and September till end of September. 3 महीने उसको hold करना है shares and he wants to hedge himself. So what he can do is go or take a short position on Nifty. He has to take one lot short as per the calculations that we have done. Right, calculation कैसे करते हैं? Value of the portfolio divided by the value of the lot into beta. Beta क्यों दिया जाता है? It just helps us to increase. मानो beta हटा दो वहां पिक्चर से, right? Or you can put beta of 1. Obviously it will be less than one lot. But share is traveling at a quicker pace. How much quick? 1.25x of the Nifty pace. So obviously Nifty को अपनी quantity बढ़ानी पड़ेगी. If we increase the Nifty quantity, then only अमाउंट मैच कर पाएंगे हम लोग. जैसे हमारा परफेक्टली हेड सिचुएशन आया है इधर, देखिए. राइट, सो आई एम रीआइटरेटिंग इट टाइम एंड अगेन. निफ्टी स्लो जा रहा है, ठीक है, स्टॉक फास्ट भाग रहा है. सो हाउ डू वी मैच बोथ ऑफ देम? ऑब्वियसली यू बल्क अप द निफ्टी, देन ओनली द पेस विल टैली. अदरवाइज निफ्टी इज मूविंग बिहाइंड एंड द स्टॉक इज यू कैन से मूविंग मच फास्टर. ठीक है, तो यहाँ हमने वन लॉट आ गया. वैसे ही इन लोगों ने सेटअप किया हुआ था सम. ठीक है, तो फिर सेकंड पार्ट में क्या पूछा हमसे? निफ्टी फ्यूचर्स राइजेस बाय 10%, ML लिमिटेड शेयर्स fall by 5%. You have to take this situation in isolation as per the suggested answer. तो फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया that if Nifty futures rise by 10%, stock would rise by 12.5%, right, and it will be perfectly hedged. Second situation was a nice one. They said the ML Limited shares fall by 5%. So we have to first calculate how much the Nifty futures would have fallen by, right, taking into account the beta. And then we figure out a loss on the value of the portfolio due to the fall in the price of the shares, whereas we have shorted the Nifty futures and we gain over there, again leading to a perfectly hedged situation. If it was written this and this first and second, right, simultaneously occurring as a RAM wala sum, then it would be a total loss scenario. Last part they are saying that is it possible stock as well as Nifty to rise or fall at the same percentage? Very much, right?
it can rise and fall at the same percentage, right? In that case, the beta would be 1. In real life, beta can be also negative beta for a short period of time, right? Or you can say a medium period of time. They can move in any direction, any extent, right? So वो आप लिख सकते हो इधर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए